जीतना चाहेंगे, खाली हाथ आना नहीं चाहेंगे। कांटों में रह के भी गुलाबों की तरह महकना सीखो, कीचड़ में रह के भी कमल की तरह खिलना सीखो। जो परिस्थितियों से घबरा जाए वो लौह पुरुष नहीं है। रात में रह के भी अंगारों की तरह दहकना सीखो। ये वर्ल्ड कप अब भारत का है और 150 करोड़ हिंदुस्तानी उतावले हैं उस गाने को गाने के लिए। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जब चांद पे गए थे तो पूछा था हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कि भारत कैसा लग रहा है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और ये कैच बैंक की तरह सेफ। फिर से सूर्य और कोहली को देखिए, ये डगआउट को देखिए, ये रोमांच को देखिए, ये खुशी को देखिए। अरे 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 खुशियां ही खुशियां हो दामन में जिसके, क्यों ना खुशी से वो दीवाना हो जाए। दीवानगी की हद तक खुशी है भैया। झंडे दिए गाड़, खंबे दिए उखाड़। विश्व कप जेब में डाल लिया है। गौरवपूर्ण बिताया हुआ 1 घंटा कीर्ति रहित युगों से कहीं बेहतर है। 11 साल का इंतजार, आज वो इंतजार खत्म हुआ। हर सर गर्व से उठेगा, हर चेहरा चांद की तरह चमकेगा। और मैं ये मानता हूं कि आकाश की कोई सीमा नहीं, पृथ्वी का कोई तोल नहीं, साधु की कोई जात नहीं। सूर्य कुमार यादव, आज के दिन उस पल तेरा कोई तोल नहीं, कोई मोल नहीं। सभी भारतीयों की बेसब्री खत्म। वर्ल्ड कप ट्रॉफी का जो सूखा था वो खत्म। अब कहानी शुरू। विश्व चैंपियन भारतीय टीम की विश्व चैंपियन की तरह खेले, एक भी मैच नहीं हारे इस विश्व कप में। 30 गेंदों में 30 रन साउथ अफ्रीका को चाहिए थे। पीछे थी भारतीय टीम, लेकिन फिर आए हार्दिक पांड्या, फिर आए जसप्रीत बुमराह और फिर आखिर में आके भारत ने यह मुकाबला जीता। भारत ने यह विश्व कप जीता। 2007 में साउथ अफ्रीका में जीता था विश्व कप और 2024 में साउथ अफ्रीका के सामने जीता यह विश्व कप। 1983 की बात याद आती है जब वर्ल्ड कप उठाया था कपिल देव साहब ने, तो हर दिल से आवाज निकली थी, इंडिया ईस्ट और वेस्ट, यू आर द बेस्ट अमंग्स द रेस्ट। और आज विराट कोहली, जब वक्त आया, कमिट द आवर, कमिट द मैन, एक कमाल की पारी खेली, एक नींव धरी। और ये हार्दिक पांड्या, occasions will not make men strong or weak, they'll show what metal you are made of, nerves of steel। बहुत सारी उत्सुकता थी, बहुत सारी नर्वस एनर्जी थी, लेकिन भारतीय टीम ने उसे सकारात्मक एनर्जी में कन्वर्ट किया। गौरवपूर्ण बिताया हुआ 1 घंटा कीर्ति रहित युगों से कहीं बेहतर है। और बुलबुला चाहे एक पल क्यों ना जिए, सबसे ऊंचा होकर जीता है इस टूर्नामेंट में। भारतीय टीम सबसे ऊंची, सबसे ऊपर। और देखिए ये आंसू, ये आंखें भी क्या चीज हैं, गमगीन हो तो छलक जाती हैं और अगर खुशी से आंसू आए तो समझ लो चमक जाती हैं। हर आंख चमकती हुई, हर दिल धड़कता हुआ और कहता हुआ, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। रोहित शर्मा के आंसू निकले थे 19 नवंबर को। 19 नवंबर को ऑस्ट्रेलिया के सामने आंसू निकले थे, वो दुखी के आंसू थे। आज जो आंसू निकल रहे, आज जो आंसू है, ये खुशी के आंसू है वेस्ट इंडीज में। ये वर्ल्ड कप की विक्ट्री के आंसू है, जो हार्दिक पांड्या की आंखों से बह रहे, जो रोहित शर्मा की आंखों से बह रहे, जो अर्शदीप की आंखों में नजर आ रहे। भारतीय टीम की ये चैंपियनशिप सालों साल याद रही जाएगी, क्योंकि ये लड़ाई जो लड़ी है, ये लड़ाई जो जीती है, जिसमें भारत एक वक्त पीछे चल रही थी, वहां से आगे आई है। ये सभी की जीत है, जो खिलाड़ी खेल रहे, जो खिलाड़ी नहीं खेल रहे और जो फैंस देख रहे।
ये भारत के 150 करोड़ फैंस की जीत है। देखिए, कांटेवार नाम तलवार का, लड़े फौज नाम सरदार का। ये है वो सरदार जिसने सही जगह पे सही लोग फिट किए। और विराट कोहली, ये दो बड़े दिग्गज थे जिन लोगों ने ना सिर्फ सेमीफाइनल, ना सिर्फ क्वार्टर फाइनल, लेकिन फाइनल में एक ऐसा भाग दिया है, एक ऐसा यज्ञ में आहुति दी है कि भारतीय तमन्नाओं को मानो पंख लगा दिए और हर भारतीय की तमन्ना पंख लगा के उड़ने लगी सातवें आसमान में। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान सर्वश्रेष्ठ, सारे जहां से अच्छा। सारे जहां से अच्छा हर फील्ड में, क्रिकेट की फील्ड में भी विराट कोहली जो पारी आज खेले, पूरे विश्व कप में रन नहीं आए, लेकिन रन आए कब? रन आए जब भारत को सबसे ज्यादा जरूरत थी। भारतीय टीम को विराट के बल्ले से वो रनों की एक जबरदस्त लहर की जरूरत थी, वो आए। लेकिन जसप्रीत बुमराह, उनकी फैमिली ये खुश है, क्यों ना हो, क्योंकि जसप्रीत बुमराह ने 4 की इकोनॉमी से पूरे विश्व कप में गेंदबाजी की है, इसीलिए बुमराह डिजर्व करते हैं। विराट कोहली ने बहुत साल भारत के लिए रन बनाए। ये विश्व कप की ट्रॉफी, ये T20 विश्व कप की ट्रॉफी जो विराट के नाम पहली बार आई है, वो डिजर्व करते हैं। देखने वाली होती है मुंह पे रौनकें, जीत आया हो जो रण, जीत आया हो जो मन। विराट की लड़ाई खुद से थी और वो उस लड़ाई में जीत गए। और राहुल द्रविड़ के लिए ये सबसे बड़ा मोमेंट है। एक ऐसा दिग्गज जिसने भारतवर्ष की वॉक और ब्रोकन ग्लास फॉर हिज कंट्री, इस त्याग, इस प्यार के लिए ये वर्ल्ड कप राहुल द्रविड़ को एक बहुत ही अच्छी भेंट थी। इतिहास के पन्नों में जब भी वर्ल्ड कप का जिक्र आएगा, राहुल द्रविड़ पहले पन्ने पे तेरा जिक्र आएगा। ना तुझसे पहले कोई ऐसा था, ना तेरे बाद कोई ऐसा होगा। आज वंदे मातरम हर कोई फख्र से कहेगा। और ये वो कप्तान है जो सेल्फलेस खेला है, जो निष्काम खेला है, जो निस्वार्थ खेला है। और हर टीम का बंदा अपने लिए नहीं, टीम को जिताने के लिए खेला है। टीम के विजय रथ पे खेला, हर कोई संगठन के लिए खेला। और संगठित हुई शक्ति जीत का कारण बनती है, विभाजित हुई शक्ति पतन का कारण बनती है। वाकई एक युग पुरुष बन गए हैं रोहित शर्मा। कमाल का ये शॉट है, पृथ्वी पे पूरी तरह से जिसे कहते हैं खुशी का इजहार करते हुए, भारत माता झंडा ऊंचा रहे हमारा, प्रण करते हैं आजादी की शाम नहीं होने देंगे, वीरों की समाधियों को बदनाम नहीं होने देंगे। जब तक तन में गर्म लहू की एक बूंद भी बाकी है, भारत माता का आंचल बदनाम नहीं होने देंगे, नीलाम नहीं होने देंगे। वाह भाई रोहित, वाह वाह रे बापू। ये टीम इतिहास के पन्नों पे सुनहरे अक्षरों में चिनी गई, इनका नाम अमर है। तेरह साल बाद, जी हाँ 13 साल बाद वो सिल्वरवेयर विश्व कप वापस घर पे। 176 बनाए भारत ने, 177 चेस करते हुए। एक वक्त लग रहा था दक्षिण अफ्रीका आगे, 30 गेंदों पे 30 रन। वहीं पे आया वो हार्दिक का पहला विकेट, क्लासन को किया चलता और उसके बाद बुमराह ने किया एक और विकेट लिया, वापस भेजा वहां पे।
और फिर 7 रन से फाइनल्स को जीत लिया है भारत ने। चैंपियन बने, अनडिफीटेड चैंपियन। चलते हैं वापस मैदान, वहां पे मोहम्मद सिराज मौजूद है। क्या कह रहे हैं चैंपियन मोहम्मद सिराज? Siraj, you were there. In the last 5 overs, they needed 30 runs and Bumrah was walking. What was the mood like in the dressing room? I'm only believe on Jesse bhai because game changer player. He is only one guy, is Jasprit Bumrah. I thought this hour maybe is match changing hour. And what I'm thinking about is exactly same there. I'm like, it's unbelievable feeling right now. To be honest, I can't describe my feeling. 6 months ago, you played a final and you were part of the 11 and you ended up losing that game. How is the feeling right now that you won the World Cup? DK bhai, last year World Cup, I lost same like, but now this match, I think is as a player, you also the last year World Cup you there, so his feeling is unbelievable. Every professional cricketer he wants World Cup final, but I'm to be grateful. I'm blessed. I'm enjoying this moment. To be honest, I'm lucky. Thank God, Almighty Allah. Thanks, and on to you, Anas. Hardik, you're proudly holding that Indian flag. Just sum up what this World Cup win means to you. You know, means a lot. It's very emotional. We've been working very hard, but something was not clicking. And I think today was a day where we kind of fulfilled what the whole world, I mean, whole nation wanted. You know, so many people supporting. And I think even it's more special for me how my 6 months have been. I've been very graceful of not speaking a word. Things have been very unfair, but I believe that, you know, if I keep working hard, there will be a time where I will be able to, you know, shine and, you know, do what I have always I've done. And I think that sums everything up. You know, it was a dream to win, and especially getting an opportunity like this makes it even more special. You believed in yourself. Did you believe in the team when they needed 30 from 30? Did you still have that real belief you could do it? We always believed we can do it. It was just about we execute our plans, stay calm, and, you know, let the pressure come to them. And I mean, credit to Jassi and the fast bowlers, the way they bowled those last 4 overs, change everything. And yeah, it was about time to get it. You're cool and calm and calculated. How were you in that last over? I mean, I knew pressure's not gonna, if I'm not gonna be calm, it's not gonna help me. So for me, it was simple that I execute my plans and make sure that every ball which I bowl, I commit 100%. So yeah, I mean, I've been in this situation. Yes, I've not won it, but for me, I've always enjoyed pressure situation. All of a sudden, my run-up speed increased as well when the time came. So yeah, it's been wonderful. It's been very enjoyed. And a final question, you gave your coach, Rahul Dravid, a big hug. His last day as coach, he is someone that's backed you and the team throughout. I mean, you know, I'm very happy for him. You know, he's been a wonderful man. Really enjoyed working with him. To give him a farewell like this, where this is how his so far coaching career ends. It's been wonderful. You know, I've had a very good relationship with him. Kind of became friends, and you know, very excited, very happy for him that the way they all are going, all the support staff, they've been very integral on last 3-4 years. And a big kiss from your captain as well. Hardik Pandya, World Cup winner, well done. Aksar, it's been a great few months for you and you've been one of the players of this tournament so far. What does this mean to you? It's meant everything for me. Like, when I come to this World Cup, you know, in last few years, I've been getting injured, not getting that performance, but this time I'm just feeling that I have to do something for India, something good for India, and finally I did it. I'm feeling so proud. The team has been part of so many finals, so what did you do when this happened today? I'm trying to keep it simple. I'm not thinking about anything. I'm just thinking about this is another match for me, and I'm not thinking this is the final. So that's work for me. When I went for the batting, I think I'm not thinking about ahead that if I'm got out here, then what happens? I'm just play on the merit, and yeah, that's What does this mean to Rahul Dravid and Rohit Sharma?
I think Rahul Dravid and Rohit Sharma. You can see for Rohit Sharma, he's an amazing man. I think he led Team India very good in this series and in this World Cup. I think and Rahul bhai give everything to us that you can enjoy it. You can't take pressure. Just enjoy and just do your best. There are a couple of times you promoted up the order. Were you expecting it? No, not today. I think I thought I'm going down the order, but when we got out 3 wickets early, then suddenly Rahul bhai told me that X, please pad up, and yeah, I think I didn't get to think about anything about my batting, so I think that worked for me. Thanks a lot and well done, Akshar. Cheers, thank you. ये जज्बात आप समझ सकते हैं, ये एक दिन की मेहनत नहीं है, सालों भर का मेहनत है। 2007 में शुरुआत भारत नहीं किया था, उसके बाद पाकिस्तान, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड डिफेंडिंग चैंपियन 2022 का, और 13 साल बाद एक आईसीसी ट्रॉफी वापस घर। 2024 चैंपियन दूसरी बार भारत इस T20 वर्ल्ड कप का, और वो 3 चेहरे 1983 कपिल पाजी, MS धोनी, अब रोहित शर्मा 2024 वर्ल्ड चैंपियन, और चलते हैं प्लेयर ऑफ द मैच इस विश्व कप फाइनल के विराट कोहली। And can you imagine, it has just started to rain here. Our player of the match, Mr. Khalid Zamil, Vice President Public Affairs Aramco, to none other than Virat Kohli. Let the emotion run, Virat. What does this mean to you? Well, this was my last T20 World Cup, and this is exactly what we wanted to achieve. This is an amazing game. I was telling Rohit today when we went out to bat, I was like, one day you feel like you can't get a run, and then you come out and then things happen. God is great. I bow my head in gratitude. I'm just really grateful I was able to get the job done for the team on the day that it mattered the most. It was a different Virat Kohli we saw today, the Virat Kohli we'd seen all these years. What prompted that change in you? Well, just the occasion. It was now or never kind of a situation. I knew this is my last T20 game playing for India. It's the last World Cup that I was going to play. So I wanted to make the most of it. And this was our aim. We wanted to win an ICC tournament. We wanted to lift the cup. And as I said, it was the occasion that helped me to put my head down and just respect the situation rather than trying to force things out there and just really play the game that my team wanted me to play. Have you just made an announcement, Virat, about T20 internationals? Yes, I have. This was an open secret. It was not something that I was not going to announce even if we had lost. This was going to be my last T20 World Cup playing for India. It's time for the next generation to take over. 2-year cycle. There's some amazing players playing in India, and they're going to take the team forward in the 2020 format and do wonders as we've seen them do in the IPL. And I have no doubts that they'll keep the flag waving high and, you know, really take this team further from here now. In 2011, you said it's time to carry someone on the shoulders because he's carried India for so long. Time to carry you on the shoulders maybe for this. No, I don't think so. I mean, look, it's been a long wait for us, you know, just waiting to win an ICC tournament. And it's not just me alone. You look at someone like Rohit as well. He's played 9 T20 World Cups. This is my 6th. So he deserves it as much as anyone else in the squad. So we're just happy we were able to get the job done. And really, it's hard to explain, you know, the emotions I felt after the game. I knew what kind of mindset I was in. I wasn't very confident in the last few games. I wasn't feeling really good out there. But when God has to bless you with something, He shows you in ways that you can't imagine. That's why I said I'm really grateful and humbled right now when I bow my head. Well, and Virat, the world sees you as a very tough human being. It's revealing to see this side to you today. It's been difficult, and hence the emotions of how the game went as well, where we came back from, the kind of character the guys showed. It's really difficult to hold things back. I think it's going to sink in a little later, and the emotions are going to come to the surface a little later more, but it's just an amazing day. I couldn't be more thankful. If it is indeed the last one, you go with your head held high as you always do. Well done, Virat Kohli. Thank you very much. Thank you, Harshad.
What a player. इससे बेहतर आखिरी विश्व कप का मैच नहीं हो सकता. You leave on a high, legend विराट कोहली. Player of the match, finals 2024, चैंपियन टीम इंडिया. 7 रन से जीता इस मैच को. क्लोज मैच, नेवर से डाई एटीट्यूड दोबारा दिखाया रोहित और रोहित की टीम ने. चलिए अब बुमराह की तरफ चलते हैं. मैन ऑफ द मोमेंट, अनदर चैंपियन. Vice President Public Affairs Aramco will present the trophy to the incredible Jasprit Bumrah. I'm just pausing to let the sound come through, Jasprit. Did you think when you were a kid growing up in Ahmedabad that far away here in Barbados you'd be seeing these kind of emotions? Not at all. You know, usually I'm the one who tries to keep my emotions in check and, you know, try to focus on the job. But today, you know, I don't have a lot of words. The emotions are taking over. I usually don't cry after a game, but, you know, this feels really special. You know, midway stage, we felt we were in trouble, but to pull off a win like this is an unreal feeling. Is this the very best that you have bowled? Because I've seen cricket for a while. I've yet to see a white ball bowler bowl at this level consistently. What do you think of it? I'm just really over the moon that, you know, my son is here, my family is here, and I could do something special for India. You know, we've been working really hard towards this, and we've come close. We just fell short last time, but we were able to go through this time. You know, there's no better feeling than that. We play the sport for this, for these days, for big stages when you do well and you get your team through. There's no better feeling. It's incredible that in a game that's normally dominated by batters, there's a bowler who's the player of the tournament. And right from the first game, you just look like your rhythm was right, everything was right. Yeah, it just felt good. You know, I was trying to keep myself in a bubble because I was spending time with my family, not thinking too far ahead, staying where your feet are. All of these things are okay. Yes, we do say it, but when comes the big day, you have to do it even more. You have to do what you have been doing, not to try over because it's the final. So yeah, it just felt very good. And over the tournament, I felt very clear and calm. Was there ever pressure on you because you are the lead bowler? Was there ever pressure on you that your 4 overs are the key moments, and especially today when you came back for the 16th? I don't look at it like that because, you know, whenever I'm at my peak mindset, I think of one ball at a time and 1 over at a time. If I think of the overall picture too early, I give on to the pressure and I try too hard sometimes. So this was what was working for me today. Yes, obviously emotions can take over and was taking over, but you had to keep yourself in check. But now the job is done, the emotions can come out and you can, you know, scream and shout. Can I just ask you one final question on when you took the ball for the 16th over? It was 30 of 5 overs. The game was slipping out. You're standing at the top of your mark. Surely there's a thought going on that we'd love to share from you. Yeah, it was, you know, when it was a runner ball, we did think that, you know, what is happening? So when I came, I saw the ball was a little scuffed up and a little reverse a bit. So I thought, what is the difficult shot for the batsman? How will he, you know, get beaten or I will get a wicket? So I thought length ball was an option. The ball was reverse swinging. I was happy that I was able to keep my calm and I was able to execute. Go and put that trophy in your cabinet. It'll take pride of place. Well done, Jasprit Bumrah. It's been an absolute honor watching you play cricket. Thank you so much. Cheers. Thank you. Thank you. विराट कोहली, हम कितनी बार वर्ल्ड कप से पहले और वर्ल्ड कप के बीच में बात करते आए हैं. आज वर्ल्ड कप के बाद बात कर रहे हैं, चैंपियन बन के बात कर रहे हैं. मुझे पता है आप इमोशंस को बहुत खूबसूरती से बयां करते हैं. 2011 में एक बहुत इंपॉर्टेंट 35 की पारी थी, लेकिन आज वही कहा, बड़े खिलाड़ी बड़े रन नहीं ढूंढते, बड़ा मंच ढूंढते हैं. जस्ट टेक मी फ्रॉम द मोमेंट यू वॉक्ड इन, जस्ट टेक मी थ्रू द डे. To be honest, I couldn't have imagined this in my wildest dreams. Also considering how my tournament had gone so far. It's a great lesson for me, really humbled by the game big time. Put my head down and, you know, put my ego on the side and say, you're nothing. If you feel like you are everything out there and you can do wonders, you're nothing. You really have to put your head down and respect the situation. And God showed me that if you try to get ahead of yourself, then I will pull you back and I will keep you in your spot. And today it was, I don't know, I just felt different today. I just felt like I was more anchored, more in sync with the situation. And just I was given the composure to just put aside everything that had gone on till now and really go the situation. विराट, आपने फाइनल खेले हैं, आपने सेमीज खेले हैं और पिछले कुछ सालों में
इट फेल्ट कि 2023 हमसे कोई ले जा नहीं सकता. Still remember you and Rohit, उसके बाद जो moments थे, you know, just to prepare yourself कि एक और मौका है, और बहुत पसंद है सबको आप और रोहित एक साथ में. हमने कितनी बार बात की है कि एक साथ आप वर्ल्ड कप डिजर्व करते हैं. इसके मायने क्या है? विराट जीता है वर्ल्ड कप पहले, लेकिन आज ये वर्ल्ड कप जीतने के अपने करियर के इस मोड़ पे मायने क्या है विराट कोहली के लिए? नहीं, बहुत ऑब्वियसली उसकी वैल्यू के बाद टीम के रिस्पॉन्स. जी हाँ, वो आंसू सिर्फ प्लेयर्स के आंखों में नहीं, वो आंसू 150 करोड़ से भी ज्यादा लोगों के आंखों में भी है. खुशी के आंसू. फैंस विश्व भर में. जी हाँ, कम द यार, कम द मैन. बड़ा प्लेयर, बड़ा मंच, बड़ी पारी. 59 गेंदों में मुश्किल वक्त में आए थे बल्लेबाजी करने. मुश्किल वक्त था, उसको खेल के निकाला और अपने ही विराट अंदाज में फिनिश किया. महत्वपूर्ण पारी. प्लेयर ऑफ द मैच विराट कोहली. जहां 176 बनाई भारत. काफी क्लोज गया. एक वक्त रन बॉल 30 रन. फिर आया हार्दिक का विकेट. क्लासन को चलता किया. अगला ओवर बुमराह ने शानदार ओवर डाला, वो 16वां. और उसके बाद 7 रन से मैच को जीता भारत ने और बने चैंपियन आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024. सिल्वरवेयर विश्व कप 13 साल बाद, माफ कीजिए 11 साल बाद वापस घर. चलिए बातचीत जारी रहेंगी. चलते सीधा स्टूडियोज में शो की तरफ.